today, Aditya and I, to announce कि हम लोग एक food यात्रा पे जा रहे हैं. Road trip के आसपास ही है. Of course, we are leaving from Bombay and we are going all the way to Chandigarh on a food यात्रा. जहाँ पे हम लोग किसी भी दिन जहाँ पर भी हैं, based on your suggestions, जो special चीजें हैं खाने के लिए, that we will be trying. So we are going all over India. And more than promotions for Parineeti and me, I think it's a childhood dream that we're getting to live for free, in the name of promotions for the film. I think we're both really big foodies, and there's nothing better I could ask for than just being paid to go and eat everywhere in our country. So that's, we're very excited about it. Yeah, and we're also going to be tracked throughout this whole trip. So anytime you guys want to, anyone wants to know where we are, Exactly. You guys can track us, which is very interesting and scary at the same time. Which is very scary because it's not like we can say हम लोग Delhi में और हम कहीं और होंगे. So we are going to be tracked on dawat-e-ishq.com. So anytime you can just go online and say आज आदित्य और परिणीति कहाँ हैं, and we can. We're starting off at Cafe Madras. Yeah, right? We know the start and end point. That's for sure. But the rest, you'll have to contact YRF marketing team. You all know them. They're not telling us anything. They're just saying, keep quiet, pack your bags and go. So, Cafe Madras is the first one. We've heard a lot about it, and we obviously want to start early in the morning. So we said, best breakfast place in Bombay kahan hai? So we are starting in Matunga. So you all are invited. Please come, eat with us. We are only eating for the next few days. This is going to be a crazy tough trip. Job. This film has been very tough for us in many ways. As you can see. मैम फिल्म के ट्रेलर तो बहुत अच्छे हैं. इट लुक्स लाइक अ फन लविंग फिल्म. ये बताइए कि शूटिंग के टाइम पे आपको कितना मजा आया? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? ऑफ कोर्स शूटिंग करने से पहले ही हमें पता था कि बहुत सारा खाना होने वाला है सेट पे, सीन्स में, क्योंकि लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में कि इस सीन में बिरयानी है, इस सीन में शाही टुकड़ा है. बट वो शूट करना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यू आर ईटिंग फ्रॉम 7 o'clock in the morning till night. एंड आप रात तक बस खाते ही जा रहे हैं. बट फिर भी आदित्य था, अनुपम सर थे, विद whom I got along really well. तो बहुत मज़ा आया हम तीनों को शूट करने. आई होप वो आपको पिक्चर में भी दिखे. बिरयानी को छोड़ के कौन सा लखनवी फूड ऐसा है जिसके बारे में आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगी? एक्चुअली मुझे लखनऊ की बिरयानी इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे हैदराबाद की बिरयानी पसंद है. सो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हाफ करेक्ट है. एंड द रीज़न ही मस्ट हैव सेड दैट इज़ क्योंकि इशकज़ादे के टाइम पे मैं 3 महीने लखनऊ में रही थी, एंड नाउ फॉर 1 month. तो काफ़ी अपनी ज़िंदगी मैंने आई थिंक लखनऊ में अब गुजार ली है. बट आई लव्ड टुंडी के कबाब विच आई इंट्रोड्यूस्ड Aditya to, and we were then having it every single day. बिरयानी को छोड़ के कौन सा लखनवी फूड ऐसा है जिसके बारे में आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगी? एक्चुअली मुझे लखनऊ की बिरयानी इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे हैदराबाद की बिरयानी पसंद है. सो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हाफ करेक्ट है. एंड द रीज़न ही मस्ट हैव सेड दैट इज़ क्योंकि इशकज़ादे के टाइम पे मैं 3 महीने लखनऊ में रही थी, एंड नाउ फॉर 1 month. तो काफ़ी अपनी ज़िंदगी मैंने आई थिंक लखनऊ में अब गुजार ली है. बट आई लव्ड टुंडी के कबाब विच आई इंट्रोड्यूस्ड Aditya to, and we were then having it every single day. Tundi Kebab became our caterers. So it was good. So anytime, in fact, इतना हो गया था कि हम उनको फ़ोन करते थे और बोलते थे हम 20 मिनट में होटल पहुँच रहे हैं तो आप भेज दीजिए. तो हमारा टाइमिंग और टुंडी कबाब का टाइमिंग एक हो गया था. It was that bad. But yeah, टुंडी के कबाब I would say was my other favorite. Pia from CNN IBN. Hi. Hi. You guys are going to take a road trip, but recently, unfortunately, there have been floods in Jammu and Kashmir. What would you have to say about that? Would you all like to contribute and probably help in your own small way? Yeah, for sure. We'd love to help always if there's a way. I think these things should be made easier to do almost. I would love to help about so many things, but I just don't know how to go about it. If it was as simple as the way you're putting it, both of us are bang in the middle of our promotions right now. We barely have any time to do anything. But if there is a way that we could help that is feasible within the time frame that we have, for sure. I don't think we're going to be going up there. But if the question is if you would like to help, yeah, definitely. Parineeti, what about you? What would you have to say about the calamity?
I mean, I can only offer my emotional support right now. It's the most that I can do, and any kind of help. If, like you said, we don't know how to go about it. That's absolutely right because we are sitting here. But anything that we can do, if we learn about it, we will do it. ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को. डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज.